Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Muhammad Latif and I am your instructor of the subject Principle of Animal Lab 2. Today is the lecture number 10 and in this lecture we will talk about the control of gene expression in eukaryotes. So the expression of gene can be controlled at different levels in the eukaryotes, and what are that levels are: number one, it can be controlled at transcription level. What is transcription level? That when a gene, you must familiar about the genes. Gene is a set of nucleotide which is responsible for the production of a specific polypeptide or protein. So if a gene wants to become a protein, firstly its information must be transcribed, and the formation of RNA from DNA is called transcription. So firstly, the expression of gene can be controlled at transcriptional level. Then the other step in which the expression of gene can be controlled is at regulation of splicing. What is regulation of splicing? Means that when mRNA forms, it has some coding sequence and some non-coding sequences. So the coding sequences must have all the information for protein, but non-coding sequence do not have that information, and it must be spliced. Splice means it must be cut. So the gene expression can be controlled at splicing level, and the other is the transport level, which is transport of mRNA from nucleus to cytoplasm. That when splicing has been done, that mRNA is transported to the cytoplasm, because you all know that mRNA is formed in the nucleus, then it has to be transferred into the cytoplasm. And the last step of gene expression control is at the translational level. What is translational level? Means that the synthesis of protein from mRNA. So it can be checked at this level. We will talk about in detail and all these steps in detail. थोड़ा सा मैं आपको उर्दू में भी इसका बता दूं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बेसिकली ये हमें ये बताता है कि जब भी किसी जीन ने अपना एक्सप्रेशन देना होता है तो वो किस लेवल के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। ये बेसिकली जीन की स्विचिंग ऑन है और स्विचिंग ऑफ है, यानी जीन को या डीएनए को कैसे पता चलेगा कि उसने कब एमआरएनए बनाना है और कब एमआरएनए नहीं बनाना। या से फॉर एग्जांपल, अगर एमआरएनए बन भी गया है तो आया उस एमआरएनए ने प्रोटीन में कन्वर्ट होना है या नहीं होना, ठीक है। तो देयर इज अ मैकेनिज्म कि उसको डिफरेंट लेवल के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। ये मतलब नहीं है कि अगर एमआरएनए बन गया है तो वो प्रोटीन के अंदर ही ट्रांसफर हो, वो मुख्तलिफ स्टेप्स के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। इसका इन्हिसार सेल की जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर होता है।
अगर सेल को रिक्वायर है कोई प्रोटीन तो वो डेफिनेटली कन्वर्ट होगी प्रोटीन फॉर्मेशन में और वो सेल को जो ज़रूरत है उसकी पूरी करेगी। लेकिन अगर उसको इसकी ज़रूरत नहीं है तो वो नहीं बनेगी या उसको चेक किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टेप है इज द control of gene expression at transcription level. So what are the major steps involved in transcriptional level? There are multiple factors which are involved in transcription. What are multiple factors are the RNA synthesis depend on RNA polymerase enzymes. This is basically an enzyme which is responsible to make RNA. And numerous proteins called transcription factors help in the action of these enzymes. And the RNA polymerase and transcription factors bind to specific sequence, and this specific sequence is called promoter. So the promoter lies on the DNA, and from the promoter onward there is a coding sequence which has all the information for protein. So promoter is the main region in which the subsequent segments have all the information for protein. So the promoter is present at the start of the coding sequence of the gene. Then the polymerase moves along the DNA template. It produces complementary strand of RNA, and the transcription factors bind selectively to the other region which is called the enhancer regions. Enhancer regions are far away from the promoter region, but it play a major role in transcription. Without enhancer, the transcription cannot be started. And then this enhancer region of the DNA, I have already told you, is present thousands of nucleotides away from the promoter. And there are other things which is called co-activators. These co-activators also attach with the promoter, and then specific activators are firstly bind to the enhancer, and there is a formation of hairpin loop, and when this hairpin loop forms, the transcription starts. So this hairpin basically join enhancer to the promoter, and when this hairpin means enhancer, promoter, co-activators and activators all join, then transcription starts, means then RNA polymerase works and it produces the mRNA from DNA. Over 100 transcription factors have been discovered in eukaryotes, and you all know there are lots of genes present in eukaryotes. So every gene has its own promoter
and it has its old enhancer activators or co-activators. The next pictures will elaborate all these factors in detail. So firstly, as I said, there is a coding before coding region there is a promoter. So these are the coding region, and these coding region basically converted into the mRNA, means they have all the information of mRNA, and mRNA basically have information for making protein. So before the coding sequence there is a promoter, and the promoters must incorporate different transcriptional factors. These are called basal transcriptional factors. The data binding protein. The data binding protein, basically these are the segments which have these TATA segments, and these protein bind to this region, and different transcription factors attached to this. You can see that in this picture different transcription factors are coming to join promoter, then all the transcription factors in this join with the promoter, and RNA polymerase are also joined to the promoter, and from this onward there is a coding sequence, but it cannot be transcribed because it must be converted into, firstly must be attached with activators and co-activators. These are also proteins, and these protein firstly make in cytoplasm and then comes back to the न्यूक्लियस. और फिर ये देखें आप ये कोएक्टिवेटर्स इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के साथ अटैच हो गए हैं, और ये एक्टिवेटर जो है एनहांसर, दिस इज द एनहांसर रीजन, ये इस एनहांसर रीजन के साथ ये एक्टिवेटर जुड़ेगा और फिर ये इसके साथ आके बॉन्ड बनाएगा. तो ये एक आगे नेक्स्ट पिक्चर के अंदर आपको एक लूप बनेगी जिसको हम हेयरपिन लूप कहते हैं. ये देखें, जैसे ही एक्टिवेटर ये एनहांसर के साथ मिला है तो ये एक लूप बनी है जिसको आपने हेयरपिन लूप कहा गया है. नाउ द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज increased, so it runs whole DNA molecule and it makes a mRNA. There is also another protein which is called a repressive protein. So मैंने जैसे कि कहा कि हम जीन एक्सप्रेशन को डिफरेंट लेवल्स पे कंट्रोल कर सकते हैं. अब अगर ये इसके साथ मिल जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी और mRNA बन जाएगा. लेकिन अगर इस लेवल के ऊपर हमें mRNA नहीं चाहिए तो एक प्रोटीन आती है जिसको हम क्या कहते हैं, रिप्रेसर प्रोटीन. और ये रिप्रेसर प्रोटीन ये एक इन्हांसर के ऊपर रीजन होता है जिसको हम साइलेंसर कहते हैं. ये इसके साथ आके जुड़ जाती है. जैसे ही ये इसके साथ आके जुड़ेगी, ये देख लें आप, ये जुड़ी, तो अब ये एक्टिवेटर आया भी है लेकिन वो इसके साथ बॉन्ड नहीं बना सक रहा, क्योंकि इस रिप्रेसर प्रोटीन के साइलेंसर के साथ जुड़ने से जो कि एनहांसर रीजन के ऊपर है, ये वाला बॉन्ड नहीं बन सकेगा. और जब ये बॉन्ड नहीं बन सकेगा, यानी ट्रांसक्रिप्शन के साथ एक्टिवेटर्स नहीं जुड़ सकेंगे, तो ये जो mRNA की सिंथेसिस है ये स्टॉप हो जाएगी. तो इन दिस वे gene expression can be controlled in transcriptional level. Now the next is the post
transcriptional control of gene expression. As I already told you, when mRNA form, it has some coding sequence which is called introns and some non-coding sequence which is called कोडिंग सीक्वेंस को एक्सॉन्स कहते हैं और नॉन कोडिंग सीक्वेंस को हम इंट्रॉन कहते हैं. और आफ्टर द यूनियन ऑफ कोडिंग सीक्वेंस एंड द रिमूवल ऑफ नॉन कोडिंग सीक्वेंस, there is another process that a methylated 5' cap is attached. A methylated basically guanine is attached with the 5' of the mRNA, and there is an addition of poly A tail. Poly A means adenine के नंबर ऑफ जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो इसकी टेल के ऊपर जाके अटैच हो जाएंगे, और इस अटैचमेंट की वजह से जो mRNA है वो नाउ स्टेबल है. वो जब साइटोप्लाज्म के अंदर जाएगा तो वो फिर प्रोटीन बना सकेगा. ये देखें जरा, ये कोडिंग सीक्वेंस है जिसको हम एक्सॉन्स कहते हैं, और ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस है जिनको हम एंट्रॉन्स कहते हैं. ये देखें, ये एक्सॉन्स हैं, इनको कलर से आप देख सकते हैं, और ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस है. ठीक है जी. तो ये एक प्रोसेस होता है स्प्लाइसिंग, और ये इस स्प्लाइसिंग का प्रोसेस होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम जिसको हम स्प्लाइसोसोम्स कहते हैं. ये बेसिकली ये एक जो है ना हेयर पिन लूप बनाते हैं जिसके अंदर से इसको ये रिमूव कर इंट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं और तमाम एक्सॉन्स आपस में जुड़ जाते हैं. और जब ये जुड़ जाते हैं तो इससे पहले ये देखें स्टार्ट कोडॉन है और ये स्टॉप कोडॉन है, तो उससे पहले जो एक मेथिलेटेड गुआनिन जो कि एक न्यूक्लियोटाइड है वो इसके साथ जुड़ेगा, और बेसिकली इसके साथ ये फॉस्फोरिलेटेड है क्योंकि एनर्जी चाहिए होती है. ये बेसिकली इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैपिंग. और फिर 150 to 250 न्यूक्लियोटाइड की टेल होती है जिसको हम पोली ए टेल कहते हैं, जिसको हम पोली एडिनाइलेशन. और इस प्रोसेस के बाद डीएनए जो होता है वो उस काबिल होता है कि वो आगे जाके प्रोटीन बना सके. अगर वो इस फॉर्म में है और ये प्रोसेस नहीं हुआ तो ये वाला mRNA जो बना है ये प्रोटीन नहीं बना सकता. सो जीन एक्सप्रेशन को हम इस लेवल के ऊपर भी कंट्रोल कर सकते हैं. अगर हमें प्रोटीन नहीं चाहिए या सेल प्रोटीन नहीं बनाना चाह रहा तो वो इस लेवल को कंट्रोल कर लेगा. यानी ये वाला जो इंट्रॉन की रिमूवल है और एक्सॉन्स की जो यूनियन है और ये पॉली एडेनिलेशन है और कैपिंग है, ये प्रोसेस नहीं होगा तो आगे mRNA फंक्शनल नहीं होगा. तो इस वे के ऊपर भी हम जो mRNA है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. इसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल. मीन्स ट्रांसक्रिप्शन तो होगी, मीन्स mRNA बन गया, लेकिन mRNA बनने के बाद भी देयर आर डिफरेंट प्रोसेसेस, और उनको अगर रोक लिया जाए तो जीन को एक्सप्रेस होने से रोका जा सकता है. Then there is a translational and post-translational control of gene expression. What is translation? That is the synthesis of protein from mRNA. And translation in eukaryotic cells
involve many protein factors like initiation factors. There are opportunities for the control of gene expression at the level of translation. And the last opportunities for controlling gene expression occur after translation. वो क्या होती हैं? क्योंकि उसके अंदर there is a प्रोटीन जो बनती है उसके अंदर मेथाइलेशन हो सकती है, उसके अंदर फॉस्फेट ऐड हो सकता है, उसके अंदर और डिफरेंट प्रोसेसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से वो इस काबिल होती है कि जहाँ उसका फंक्शन है वो अपने उस जगह पे चली जाए और वहाँ जाके वो अपना जो काम है वो कर सके। क्योंकि अगर प्रोटीन बन भी गई है, ट्रांसलेशन हो भी गई है, तो उसके बाद उसके अंदर चेंजेस आती हैं, क्योंकि बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, लाइसोसाइम्स अवेलेबल होते हैं। और आपको पता है कि जो प्रोटीन बनती है किसके अंदर, क्योंकि जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जाती है गोल्गी अपरेटस के अंदर, और गोल्गी अपरेटस के अंदर उसके अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं जिसके बाद वो इस काबिल होती है कि जब वो सेल से निकलेगी और अपने टारगेट जगह पे जाएगी तो वहाँ इजीली जा सके, मींस उसके ऊपर कोई एंजाइम्स या कोई लाइसोसोम्स उसके ऊपर एक्ट ना कर सकें। और ये वाली जो चेंजेस होती हैं इसको हम पोस्ट ट्रांसलेशनल चेंजेस कहते हैं। और अगर आपका प्रोटीन बन भी गया है तो अगर इफ cell don't need that protein तो it can be controlled at this level, because post translational जो changes हैं वो नहीं होगी, और जब वो नहीं होगी तो जीन एक्सप्रेस नहीं होगा। तो अगला है कि क्या रोल है हार्मोन का इन कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ये हम जो रोल ऑफ हार्मोन है वी कैन सी इन इनवर्टिब्रेट्स। We have seen a joint which is called polytene chromosomes, which are present in the salivary glands in certain insect larvae, and the presence of these chromosomes provides an evidence for the control of gene expression at the transcriptional level, and the chromosomes puffs appear at specific sites of the polytene chromosomes. It makes the DNA in that region more accessible to RNA polymerase, and the formation of puff is controlled by a hormone which is called ecdysone. And you all know that ecdysone is involved in molting process in insects. So आपको पता है कि डीएनए के दो रीजन्स होते हैं, एक को हम यूकैरियोटिक रीजन कहते हैं, एक को हम हेटेरोक्रोमेटिन रीजन कहते हैं। तो जो यूकैरियोटिक रीजन है वो बेसिकली द एक्टिव रीजन होता है, और जो हेटेरोक्रोमेटिन ये वो रीजन है जो इनएक्टिव है, यानी कभी भी वो एक्टिव नहीं होता। और जितना भी एक्सप्रेशन होता है तमाम जीन्स का वो यूकैरियोटिक रीजन के ऊपर होता है, और ये रीजन जो है बेसिकली ये ट्रांसक्राइब होते हैं, यानी इसके ऊपर जीन्स जो होते हैं वो ट्रांसक्राइब होते हैं और वो अपनी इंफॉर्मेशन जहां उनकी ज़रूरत होती है वहां जाके देते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है हम देखते हैं इन केस ऑफ डिफरेंट इंसेक्ट्स के अंदर, लार्वी के अंदर, इंसेक्ट्स के ऊपर जहाँ वो ये डिफरेंट हार्मोन्स जो हैं वो कंट्रोल कर लेते हैं जीन एक्सप्रेशन को। अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वहाँ स्टीरॉयड हार्मोन है जो
जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। स्टीरॉयड्स हार्मोन आप जानते हैं, जितने भी सेक्स हार्मोन हैं, इनके ऊपर स्टीरॉयड्स मौजूद होता है और अदर सॉल्युबल जो कुछ लिपिड्स हैं। ये जो सेक्स हार्मोन्स हैं एंड अदर स्टीरॉयड्स होते हैं, ये बेसिकली आल्टर करते हैं जीन एक्सप्रेशन इन टारगेट cells of vertebrates, and you all know that steroids are soluble in lipids. When a cell is exposed to a steroid, the hormone diffuses across the plasma membrane, क्योंकि आपको पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी अंदर लिपिड है, और क्योंकि लिपिड हार्मोन भी लिपिड का है तो वो इजीली डिफ्यूज हो सकता है। इस डिफ्यूजन की वजह से इट क्रॉसेस द साइटोप्लाज्म एंड इट देन एंटर्स द न्यूक्लियस वेयर इट कंबाइंस विद अ सॉल्युबल रिसेप्टर प्रोटीन। इन द एब्सेंस ऑफ द स्टीरॉयड, यानी अगर स्टीरॉयड नहीं है, द रिसेप्टर प्रोटीन इज एसोसिएटेड विद एन इनहिबिटरी प्रोटीन। इनहिबिटरी प्रोटीन यानी जो रिसेप्टर प्रोटीन है वो एक इनहिबिटरी प्रोटीन के साथ जुड़ी होती है, और बाइंडिंग द स्टीरॉयड हार्मोन टू द रिसेप्टर काजेज द रिलीज ऑफ इनहिबिटरी प्रोटीन। यानी जैसे ही स्टीरॉयड उस प्रोटीन के साथ जाके जुड़ता है वो प्रोटीन वहाँ से रिलीज हो जाती है, और इसका रिलीज होने का मतलब, इनहिबिटरी प्रोटीन के रिलीज होने का मतलब क्या है कि अब जीन इस पोजीशन में आ चुका है कि वो अपने आप को एक्टिवेट कर सकता है। Therefore, the activated receptor protein can now attach on the specific sites on the DNA. On these sites are within enhancer regions that control steroid responsive genes. Thus, steroid acts as a chemical signal to switch on specific genes in certain cells. So हमें ये देखा कि कुछ क्रोमोसोम्स भी इन्वॉल्व होते हैं इन कंट्रोलिंग जीन एक्सप्रेशन, और कुछ जो हार्मोन्स हैं जिसको हम स्टीरॉयड हार्मोन्स कहते हैं ये भी इन्वॉल्व होते हैं इन कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। बिकॉज अगर ये स्टीरॉयड हार्मोन ये ना हो तो जो इनहिबिटरी प्रोटीन है वो हमेशा एनहांसर रीजन के साथ जाके जुड़ी रहती है, लेकिन जैसे ही स्टीरॉयड हार्मोन आएंगे वो इनहिबिटरी प्रोटीन को वहाँ से रिलीज करा देंगे, और जैसे ही इनहिबिटरी का मतलब आपको पता है कि वो इनहिबिशन कर रही है, रोक रही है, जैसे ही वो वहाँ से रुक जाएंगे तो वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकेगा। लेकिन जैसे ही ये रिलीज हो जाएगी यानी वहाँ से ख़त्म हो जाएगी तो जो जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकेगा। तो इसलिए सर्टेन स्टीरॉयड हार्मोन भी डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के अंदर स्पेसिफिक जो जीन्स हैं उनको वो कंट्रोल कर सकते हैं। जो आगे आपको वीडियोस मैंने कुछ जो हैं अपलोड किए हैं, इससे पहले आपको मैंने उसको नहीं दिखाया था कि आपको मैं पहले खुद प्रोसेस एक समझा सकूं। अब ये वीडियो आप जब देखेंगे तो फिर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर तौर पे आप कर सकेंगे कि किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन होती है और किस तरीके से आगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जो चेंजेस हैं वो किस तरीके से आती हैं। ठीक है, तो होपफुल होगा कि अब के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि कोई भी जीन जब प्रोटीन बनाता है तो उस प्रोटीन बनाने के अमल के अंदर, यानी जीन किस तरीके से mRNA के अंदर बना और फिर आगे वो उसने प्रोटीन बनाई, तो कहाँ कहाँ हम जीन के एक्सप्रेशन को रोक सकते हैं, यानी कब जीन ने स्विच ऑन होना है और कब स्विच ऑफ होना है। स्विच ऑन का मतलब क्या है कि वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, और स्विच ऑफ का मतलब क्या है कि वो अपने आप के जो प्रोटीन बनाने का अमल है या प्रोटीन का एक्शन है वो नहीं कर सकेगा। जिस तरीके से अगर हमें
लाइट चाहिए होती है तो हम स्विच ऑन करते हैं और हमारा जो बल्ब है वो जल जाता है, और जब हमें लाइट की ज़रूरत नहीं होती तो हम स्विच ऑफ करते हैं। इसी तरीके से जीन के जब प्रोटीन बनानी होती है तो वो स्विच ऑन होता है, और वो स्विच ऑन कैसे कैसे होता है, ये सारा स्टेप्स आपको अब अंडरस्टैंड हो गए हैं। For RNA polymerase to successfully bind to a eukaryotic promoter and initiate transcription, a set of proteins called transcription factors must first assemble on the promoter. The assembly process begins upstream from the transcription start site, where proteins called basal factors bind to a short TA-TA sequence in the promoter. Other basal factor proteins then bind, eventually forming a full transcription factor complex able to capture the RNA polymerase. Basal factors are essential for transcription, but cannot by themselves increase or decrease its rate. A second set of transcription factors, called coactivators, link the basal factors with a third set of transcription factor proteins called activators. Activators are regulatory proteins that bind to sequences on DNA called enhancers. Enhancers are located at sites that are distant from the promoter. The interaction of activator proteins with transcription factor subunits increases the rate of transcription. Many enhancers, scattered around the chromosome, can bind different activators, which provide a variety of responses to various signals. When a second kind of regulatory protein called a repressor binds to a silencer sequence located adjacent to or overlapping an enhancer sequence, the corresponding activator is no longer able to bind to the DNA. Our transcription animation provides an overview of the major steps involved in RNA production. In this animation, we will take a closer look at the events that prepare the DNA for transcription. mRNA and eventually proteins are produced when and where they are needed in an organism. Some genes, such as those for housekeeping proteins in processes like glycolysis, are expressed all of the time. These genes undergo what is known as constitutive transcription. Other proteins are only produced at specific times in certain cells. In these cells, genes undergo a process called regulated transcription. Transcription is regulated by proteins called transcription factors. These factors are proteins that are produced in the cytoplasm and eventually migrate into the nucleus, where they interact with DNA and activate transcription. These transcription factors only interact with specific genes, those genes whose transcription they control. Most eukaryotic species have over 1,000 transcription factors. Regulated transcription begins when a signal is received by the cell. This signal, often a protein, begins a signal transduction cascade that lets the cell know certain proteins are now needed. The most common activation event for a protein in a signal pathway is the addition of a phosphate group. That activated protein in turn interacts with another protein. This interaction leads to the phosphorylation of the next protein in the pathway. There is often a series of proteins that are activated by phosphorylation. At the end of this cascade, the final protein will be activated and then enter the nucleus. It must make this journey because transcription only occurs inside the nucleus. After entering through a nuclear pore, the protein interacts with the specific transcription factor responsible for activating mRNA production. As with the earlier proteins, the transcription factor is modified through phosphorylation. The activated transcription factor will next bind to an enhancer region. The enhancer is a region of DNA upstream of the transcription start site
that binds a transcription factor. The transcription factor then binds to the DNA and moves to interact with the rest of the transcription protein complex, located at the transcription start site. When the formation of this complex is complete, transcription of the gene will begin. It is this sequence of events that ensures genes required for a specific tissue or only at a specific time are expressed appropriately. Eukaryotic cells must process the RNA product of transcription to form a mature, translatable messenger RNA. The first step in RNA processing is capping, the addition of a special nucleotide to the 5' end. The second step is polyadenylation, the addition of a long tail of A's at the 3' end. A eukaryotic gene typically consists of both exons, regions that encode parts of the protein product, and introns, regions that are not represented in the product. The introns are transcribed along with the exons, but they are spliced out as the third step in eukaryotic RNA processing. Ribonucleoprotein assemblies called spliceosomes do the splicing. The result of 5' capping, 3' polyadenylation, and RNA splicing is an mRNA ready to be translated.